Good afternoon, ma'am. How are you? I'm good. Hi. Good afternoon. Wait. Audio clearer? You can hear me? Can you hear me? Yes, yes, I can hear you. Um, So we will start. Yeah, sure. Yes, hi. So I hope Welcome, we can everyone. start. Good afternoon, and welcome to another afternoon session by Ananta Hemp in association with Indian Vadyas. Today we have Dr. Maria Parvez with us. She's an Ayurvedic consultant. She's based out in Mayur Vihar in Delhi. She's the owner and founder of Lush Ayurveda, and she's been connected with Ananta for a very long time. She has lots and bags of experience in the Ayurveda segment, and plus she's been a regular practitioner for medical cannabis, and she's been using cannabis in a lot of treatments, different areas, with a lot of patients of her. So today we will like to sit with her and discuss medical cannabis in some particular indications. Good afternoon, ma'am. Welcome. I would Thank just like you. to pass this on if you like to just introduce and tell us something about yourself and Lush Ayurveda first. All right. So, hello everyone. A very good afternoon. Very warm afternoon it is today. today. So, today our topic would be about neurological conditions and the effects of cannabis on such neurological conditions. I'm Dr. Maria Parvez, and I'm, as Mr. Vikram has told you, that I practice in Mayur Vihar, Delhi. So my area of expertise is based mainly on lifestyle disorders and disorders which have no cure in allopathy mostly, or they are limited. But then we have cannabis and Ayurveda, which really helps with not completely curing. I mean, it depends on the disease also, but helping the patient to improve the quality of life also, and to reduce the effect of the disease also, so that we can control the disease at an earlier stage. So as we were I as per the topic that is there, it is the neurological conditions that we are talking about, and how cannabis helps with that. So basically, first we'll know what are neurological conditions, and how it affects our body. सो बेसिकली क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो होती हैं आपके वात, इफ़ यू टॉक अबाउट आयुर्वेदा, तो Yes. आयुर्वेदा में वात व्याधि को बोलते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन मोस्टली। बट ज़रूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ वात ही इन्वॉल्व हो, बाकी और भी दोषाज इन्वॉल्व होते हैं, बट मेजरली वात इंक्रीज जो होता है उसको इसलिए वात व्याधि बोला जाता है आयुर्वेदा में। तो वात व्याधि मतलब न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, मतलब जो आपके नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। सो नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दो चीज़ें आती हैं, एक है हमारा ब्रेन और एक है स्पाइनल कॉर्ड। सो इसी की वजह से सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस कनेक्टेड रहती है। तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में मोस्टली, जैसे अब हमने बात की कैनबिस की, सो जो मेडिकल कैनबिस है बेसिकली, जो विजया हम यूज़ करते हैं, जो विजय एक्सट्रैक्ट्स यूज़ करते हैं, विजया लीफ यूज़ करते हैं अपने फॉर्मुलेशंस में, सो बेसिकली वर्क करती है हमारे वात व्याधि को कंट्रोल करने में। सो वात का जो प्रकोप होता है, जो इंक्रीज होता है बॉडी में, उसको एक तो कम करता है कैनबिस। और इनफैक्ट न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में, जैसे हमने वात व्याधि की बात की, तो जैसे बहुत सारी कंडीशंस आ जाती हैं, वो एंडलेस होती हैं, लाइक दे कैन बी पार्किंसंस मोस्टली, न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे होती हैं, पार्किंसोनिज्म होता है, एल्जाइमर्स होता है। सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस इश्यूज होती हैं, ये सारी मेजर वात व्याधि होती हैं जिसका एलोपैथी में एज सच कोई क्योर नहीं है। So उसके लिए there are certain medications that are, I won't say you don't take that also, but along with the allopathic medication that you're taking, you should definitely try Vijaya based treatment, because it is having a good effect also, quick effect as well, and it has a long lasting effect on the body. So if we talk about particular diseases, like we've picked up this particular topic, so we'll talk Ma'am, about the particular just before diseases we where, go into yeah, the diseases, yeah. are neurological disorders categorized into any category या ये neurological disorder के अंदर बस different types of diseases count होती हैं? नहीं होती हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में बहुत बहुत टाइप की होती हैं। जैसे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में जैसे मूवमेंट डिसऑर्डर्स भी होते हैं, न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिस्टोनिया हो जाते हैं बॉडी में, और
एक तरह से फाइब्रोमाइल्जिया, अगर वो तो मस्कुलर डिजीज है बट काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल में आगे वो कन्वर्ट हो जाता है, वो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। न्यूरो डीजेनरेटिव, जिसमें न्यूरॉन्स जो होते हैं उसको डीजेनरेशन होने लगता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, तो उसको न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज बोला जाता है। और साथ में क्या कहते हैं, जैसे न्यूरो डीजेनरेटिव अभी मैंने बात की कि पार्किंसंस डिजीज़ में, अल्जाइमर्स डिजीज़ में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो और भी बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं, वो बहुत सारी, मतलब कैटेगराइज अभी नहीं कर सकते और हम इतने जी। छोटे टाइम में बात नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली आई विल टेल यू अबाउट थिंग्स वेयर कैनबिस पर्टिकुलरली हैज़ बीन रिसर्च्ड एंड स्टडीज, where neurological conditions are really helping out. I mean, all the problems जो लोगों को हो रही है, it is really helpful in controlling such issues. For example, if we talk about Parkinson's, for example, we have some products from Ananta also. So where we use, the formulations based out of Vijay extracts and the CBD that is there in the formulations. For example, I give my patients VJ Vati, or I would give a pain management oil to my patients. और जिसको हायर स्टेज मतलब पार्किंसंस होती है, उस कंडीशन में मैं उनको एक्सट्रैक्ट भी देती हूँ, इट रियली वर्क्स वेल। तो पार्किंसंस में बेसिक जो फीचर्स होते हैं वो ट्रेमर्स होते हैं, ब्रैडिकाइनेसिया होता है, डिसार्थ्रिया हो जाता है। तो मतलब ट्रेमर्स मतलब हाथ कांपने लगते हैं एक पेशेंट के, तो ये मोस्टली ओल्ड एज पेशेंट्स में होता है। तो उसमें हाथ काँपना, उनकी हैंड राइटिंग चेंज हो जाती है, वो स्लो गेट हो जाती है, उनकी गेट भी अलग हो जाती है, हल्के-हल्के चलने लगते हैं, वो अलग वैडलिंग गेट लगती है। और ब्रैडिकाइनेसिया मतलब हर चीज़ में स्लो हो जाते हैं, उनका बोलना, मूवमेंट, हर चीज़ स्लो हो जाती है। सो इन द एंड दे पर मतलब हायर स्टेज में अ पेशेंट इज़ मोस्टली बेडरिडन इन केस ऑफ पार्किंसनिज्म, बिकॉज़ ओके। ये न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज़ है, इसमें डोपामाइन नहीं रिलीज़ हो रहा। तो लॉन्ग टाइम स्ट्रेस की वजह से या फिर कोई वात बढ़ने वाली कोई इशू, जैसे एक्सेसिव फिजिकल यू नो वर्क रहा है पूरे थ्रू आउट द लाइफस्टाइल, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इश्यूज हैं, या फिर कोई पर्टिकुलरली फैमिली में कोई इशू पुराना है पार्किंसनिज्म का, मतलब इट इज़ कमिंग इन द यू नो लीनिएज, हेरिडिटरी है, उस केस में पार्किंसनिज्म के बहुत ज़्यादा केसेस हो जाते हैं। तो पार्किंसंस में इट वर्क्स रियली वेल इन केस ऑफ degenerative disease, like I've told you. So cannabis helps to regenerate the neurons in the body and help release the dopamine also. सो जो डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो आपकी बॉडी में सब्सटेंशिया नाइग्रा होता है, ब्रेन में एक पार्ट होता है जहाँ से वो रिलीज होता है, तो वहाँ से रिलीज होना कम हो जाता है, इसकी वजह से ये सारी इश्यूज आनी स्टार्ट हो जाती हैं। वो पेशेंट को पेन भी होता है बॉडी में, डिसार्थ्रिया जैसे हमने बात की, और चलने में दिक्कत होती है। मतलब एक पेशेंट जो पार्किंसंस का होता है, ही इज रियली in a situation. So how पेन। we can help the patient, like we mentioned about वात व्याधि। तो अगर वात व्याधि की हम बात करें, तो एक पेशेंट अगर पार्किंसंस का है तो उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर्स पर्टिकुलरली होंगी होंगी, उसको पेनफुल इश्यूज होंगी होंगी। So definitely Vijaya comes into this play with other Ayurvedic medications. Vijaya helps really well in case of controlling the quality of life of the patient, to control the insomnia issue, जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं साथ में उसको, जैसे पार्किंसंस का पेशेंट है, ओल्ड एज में वैसे ही स्लीपिंग इश्यूज बढ़ जाती हैं, इसमें और कंडीशंस हो जाती हैं, इसलिए नहीं सो पाता पेशेंट बिकॉज ऑफ पेन। ऑल्सो समटाइम्स पेन ज़्यादा हो जाता है पेशेंट को, उस केस में हम यूज़ करते हैं। और हम इसको स्ट्रेसफुल इश्यूज, स्टमक के लिए यूज़ करते हैं। क्या होता है बेसिकली, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे हमने बात की, न्यूरो डिजेनरेटिव हो जाती हैं, तो जी। उसमें कई बार बावल और ब्लैडर मूव जो कंट्रोल होता है वो भी कम हो जाता है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, बिकॉज क्या होता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिला हुआ होता है, मतलब इट इज़ कनेक्टेड, राइट? तो उसकी यस। वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड होता है हमारा, that controls and there are some parts in the brain which controls the bladder and bowel function. Bladder मतलब यूरिन पास करने के लिए और स्टूल्स पास करने के लिए। सो कुछ पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम हो जाती है कि कुछ एक्सीडेंट्स हो गए, फॉर एग्जांपल लाइक यू मेंशनड अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो एक्सीडेंट इंड्यूस्ड जो आरटीए की वजह से, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की वजह से जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप हो जाते हैं, जैसे सर्वाइकल इश्यूज में हो गया, सर्वाइकल इंजरी हो गई कोई, देयर इज अ डायरेक्ट इंजरी ऑन द स्पाइनल कॉर्ड, उसकी केस में भी क्या होता है कि बाउल ब्लैडर कंट्रोल कम हो जाता है, तो उस केस में जी। हम उसको रिस्टोर करने में, लाइक cannabis has a good regenerative function. So definitely it works in reducing the the seriousness of the disease and helping the patient have a better quality of life. And definitely it works in the painful conditions as well. And it causes some kind of a numbness in the body, anesthesia ki tarah work karta hai. It's kind of a natural anesthesia for the body, which really helps with the, because if you're in pain, you're in stress, you won't sleep,
सो द होल लाइफ क्वालिटी हैम्पर्स. तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है. पार्किंसंस में आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पेशेंट्स. आई हैव सीन पेशेंट्स इन स्टेज 4 आल्सो हु हैव जिनको फ़ायदा हुआ है after taking this thing. And right now also in my family also I've given somebody cannabis to control their newly diagnosed Parkinsonism, and it is helping them. So, and in case of Alzheimer's also, so as we read about Alzheimer's, क्या होता है, generally dementia हो जाता है उसमें. Dementia means loss of memory. सो लॉस ऑफ मेमोरी के केस में भी आप कैनबिस बिल्कुल डेफिनेटली स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि ये भी एक न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, और इट कैन हेल्प रीजनरेट दिस ब्रेन सेल्स ऑल्सो. डेफिनेटली इट वर्क्स वेरी वेल इन सच केसेस. न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस और भी बहुत सारी होती हैं, जैसे या सो न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी, और भी कोई कंडीशंस होती है, जैसे आप बता सकते हैं विक्रम जी, व्हाट ऑल थिंग्स यू हैव सीन विद योर I पेशेंट्स. just want to ask you one thing. आपने अभी जैसे बताया all cybers के अंदर we can use cannabis in when especially when there's dementia setting in. जनरली अगर हम लोगों से बात करते हैं या जो एक जनरल परसेप्शन होती है उसके अंदर कैनबिस के साथ में सेडेशन एंड सेडेशन इज इट गोज हैंड इन हैंड. तो हाउ डज कैनबिस हेल्प व्हेन इन अल्जाइमर्स व्हेन पर्सन इज गोइंग थ्रू डिमेंशिया. एंड क्योंकि ये आई अंडरस्टैंड कि जब हम इंसोम्निया की बात कर रहे हैं या लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं तो वो उनको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ टू पुट देम ऑफ टू स्लीप एंड इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ स्लीप एंड टेक केयर ऑफ पेन एंड लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे हमने काफ़ी इसके बारे में काफ़ी रिजल्ट्स भी देखे हैं. एंड लॉट ऑफ डॉक्टर्स आर बेसिकली यूजिंग इट इन बेसिकली पेन मैनेजमेंट एंड दिस थिंग. So two questions I wanted to ask you was that in particularly in dementia cases, let's say in Alzheimer's, how does cannabis help in terms of regenerating memory? And second, आप ये जो neurological disorders की बात कर रहे हो, इसके अंदर आप cannabis को as to improve everyday life as a support medicine की तरह यूज करते हैं, या cannabis का कोई active role भी होता है in terms of its जो indication की हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर मतलब neurologically does it have any active role in terms of in terms of its regenerative power or helping the patient with the disease? Okay, so it works in both conditions, I say. So first, when you get a patient, तो सबसे पहले patient आपके पास आएगा या तो treat कराने के लिए disease, या फिर उसको पेन हो रहा होगा उसको ठीक करने के लिए. So जी. it works in both ways. So it will help the patient, because as we have said that cannabis has a quick effect. It is having a quick effect on the body. So from the first day onwards, the patient will feel a difference in the quality of life. He'll feel less stressed also, because a patient with neurological condition would be having some or the other pain. फॉर एग्जाम्पल लाइक हम सीजर डिसऑर्डर की बात करें, एपिलेप्सी की बात करें, दैट इज ऑल्सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, एंड एपिलेप्सी में सीबीडी ऑयल बहुत अच्छा वर्क करता है. सो अब सीबीडी ऑयल के बारे में भी हम बात करेंगे कि कौन कौन सा आप दे सकते हो, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी दे दिया. It's not like that. So you have to consult a doctor to actually see what kind of a disease it is, what is the prognosis, के कैसे मतलब उसकी ठीक होने की चांसेस है नहीं, ये डॉक्टर डिसाइड करता है. और तीसरा जी. ये होता है कि ट्रीटमेंट प्लान क्या करना है. सो होलिस्टिकली इफ यू वर्क अपॉन द होल डिजीज, लाइक वी आर गिविंग कैनबिस आल्सो, we are giving some ayurvedic herbs, we are working upon the diet also and the lifestyle, like yoga, meditation, or some other things, particularly if it is about acupuncture, anything else. So it works very, it works wonders in case of such neurological conditions. It बहुत अच्छा work करता है. जैसे हम अगर पंचकर्मा भी add करेंगे साथ में, and we can even add cannabis based oils for local application in case of such disorders like Parkinson's, Alzheimer's. हम पस्ती यूज कर सकते हैं. वी कैन यूज कैनबिस इन केस ऑफ लाइक त्रिलोक्य विजयावटी हमने अभी ऐड किया, तो न्यूरोलॉजिकल पेन्स जो होते हैं तो उसमें बहुत अच्छा वर्क करता है. सीजर डिसऑर्डर में हमने जैसे बात की, वापस आती हूँ उस पर. तो जी. कैनबिस जो यूज होता है उसमें दो टाइप के कैनबिस एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, सीबीडी ऑयल्स जो मार्केट में होते हैं. वन इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड द अदर वन इज अ फुल स्पेक्ट्रम. So the Yes. difference is like broad spectrum is having only CBD in that, and it is without THC, and full spectrum has some amount of THC. I mean that is dominating, like CBD dominant, but it has THC also with it. So इसमें हम देखेंगे कि पेशेंट को कि is he fit to take THC also with CBD if he is an epileptic patient, या फिर वो छोटा बच्चा है, और we have to categorize कि किस टाइप का पेशेंट है वो basically.
So this works really well in case of reducing the interval and frequency of seizures. Also, I've seen this in my young patients. Also, I've given cannabis to them for a long time. And जैसे if we talk about other neurological conditions, छोटे बच्चों में This you're अगर हम talking देखें, about epilepsy, right? Like epilepsy, yeah, in smaller seizure kids, you disorders, have used this yeah, in yeah, epilepsy they cases. can Okay, use it, yeah. Yeah. okay, So you have to see, the doctor has to decide if the kid is fit to take THC. Though we don't give a lot of THC to kids, but if it is required, then there is no harm in giving it. It depends on the doctor, how he wants to give it, okay, and what is the actual constitution of the kid, what is the what are the symptoms that he's having. So it's not necessary कि एक बच्चा epilepsy का है, he's having so many seizures in a day, or he's having one in a day. It can happen once in a year also. Because especially patients who are on epileptic treatment, they are on it for a long time. I mean, especially for a lifetime, they have to take anti-epileptic pills. So great, with that, and all these pills also have side effects, so cannabis helps with that also. Basically what happens is your endocannabinoid system is not activated. So in such cases like वात व्याधि, स्पेशली ऐसा होता है कि आपका एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम एक्टिवेटेड होता ही नहीं है. तो उस केस में क्या होता है कि आप एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम आपको होता है, तो it takes मतलब at least 10 to 15 days to for the medicine to settle in your body also, because क्या हो रहा है, बॉडी अपनी हील कर रही होती है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम को. So ऐसा हो सकता है that we start with a particular dose, and it cannot it's not necessary that the patient is going to get the result from the first day, which means that cannabis is working but your endocannabinoid system is not activated. It will take time. And then so can when you the explain this a little? yeah, Can you just explain this bit? Java, when you say that endocannabinoid system is not activated, as per my understanding, endocannabinoid system in the body, your body is also producing endocannabinoids, right? So yeah. there are anandamide and the 2-AG which is produced, which acts equally like CBD and THC. So are you talking that the endocannabinoid system is actually not working at a proper level? तो Yeah. उसको बाहर से जरूरत पड़ती है to provide CBD and THC and other compounds. So Okay, because of such certain positive factors like stress and the type of lifestyle that we all have, sedentary lifestyle, and we're not eating well, and the kind of lifestyle stress with that, and some other issues, you're not eating well, you're not your body is not functioning properly. आप सही से खा पी नहीं रहे हो, आपको healthy नहीं feel हो रहा, आप सही से सो नहीं पा रहे, आप you're not having any pains in the body. So you're having pains in the body, and you're not feeling healthy yourself. So basically, like, there's no feeling of good in your body. So it means that your body's endocannabinoid system is not actually working well. आपको immunity आपकी low हो गई है, या फिर आपको कोई diseases बार बार हो रही हैं, या पर्टिकुलरली और यू हैव डेवलप सम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जैसे डायबिटीज वगैरह हो गई है. इस वजह से बॉडी का जो पूरा मेटाबॉलिज्म है वो हैम्पर हो जाता है. जिस वजह से हम मतलब लेमैन लैंग्वेज में ये बोलेंगे कि व्हेन यू आर हेल्दी, यू आर फीलिंग गुड, यू आर ईटिंग ऑन टाइम, यू आर ईटिंग वेल, यू आर डाइजेस्टिंग, you are sleeping well, you are feeling good, you have no pains, you're feeling good about yourself. So then it means your endocannabinoid system is good. It doesn't need some external force, because you're eating well, eating healthy. But for most of the patients, because वात व्याधि हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है, तो हम आयुर्वेद में इसको बोलते हैं कि जो आपकी नर्व्स होती हैं वो ड्राई अप हो जाती हैं, तो उसको okay. नरिशमेंट की ज़रूरत होती है. सो व्हेन यू टेक कैनबिस, इट इज़ रीजनरेटिंग ऑल्सो इन द बॉडी, and it is giving some lubrication also to the nerves around with other medications. So like we have tried your products also on our patients. So like we've tried the 4000 mg wala extract on particularly Parkinson's patient, या फिर कोई spinal disorders, neurological conditions में. एक तरह से अगर spinal disorders को भी हम categorize करें, तो पेनफुल कंडीशंस होते हैं, लोअर बैक इश्यूज होती हैं, और जैसे मैंने बाउल ब्लैडर, वो दैट इज़ अ हायर एडवांस स्टेज. बट जैसे अगर हमने लोअर बैक एक नंबर या थोरेसिक लेवल पे अगर हम देखें, जो हेलो, Yeah, yeah, I can hear you. या सो लंबर स्पॉन्डिलोसिस वगैरह जो हो जाती हैं, उसकी केस में भी इट वर्क्स रियली वेल. इट इज़ हीलिंग, लाइक आई टोल्ड यू दैट ये धमनियाँ जो होती हैं उसको नरिशमेंट देता है. तो cannabis is like a long time thing that you can take for a long time, because it's not going to increase the seriousness of your disease also. आगे बढ़ाएगा नहीं disease को. Plus it will increase your better your quality of life also, and it has a good anti-inflammatory effect. So every healthy person should also start taking You're also. cannabis in some or the other form, in small doses also, just to keep their endocannabinoid system healthy.
healthy. तो आप ये ले सकते हैं डेफिनेटली. एंड देयर आर सम अदर आयुर्वेदिक हर्ब्स आल्सो. रस औषधियाँ बहुत अच्छा वर्क करती हैं इन केस ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. इफ अ पेशेंट इज कंप्लायंट, ही इज रेडी टू गो फॉर व्हाटएवर द डॉक्टर इज सेइंग फॉर at least 3 months with the help of panchkarma and cannabis and ayurvedic herbs and the lifestyle the doctor is telling you to have. So because diet also plays a very important role in case of vat vyadhi, because nourishment again is not there in the body. So we can have hemp seeds also if we talk about cannabis here. So hemp seeds are very good for the nerves as well, because they are quite rich in um, omega 3, 6, and 9. Yes. So that can also be given to patients who are having such a disorders, because generally we are all Indians, we mostly are deficient in omegas. So because of the diet that we have, so we have to particularly focus on the protein and the omega diet that has to be taken. So everything has to be balanced in that way. So if you have any questions, anybody, you can ask me, particularly if it is about a particular neurological disorder, because this is a very vast topic, cannot be covered Yes, in one definitely. The yeah. idea was to touch base with you that Yeah. we've been talking about cannabis, and we are available with a lot of doctors now. So the idea of getting the conversation today is that first we kind of revise the Yeah. information also, and as we are connecting to new doctors now, so we are also cataloging all these videos. So if a doctor is new to this medicine, or is wanting to gain information, so we're able to provide him on different topics. So pain management and lifestyle disorder is something where all the doctors are actually, mostly a lot of doctors are working, and they've been getting very good results in this. But the idea to discuss the neurological disorders, or Yeah. these type of conditions, is that certain sometimes what happens is the doctor becomes a little apprehensive in these conditions to use this medication. So but we have got great results, even from oncology, cancer point of view, and acute pain management or chronic pain management. We have seen very good results in this, and it was very good information from your side that that it has regenerative properties also, and obviously it increases the everyday quality of life of a patient. One thing which we generally get asked about a lot is, and I'm sure that you will know, doctors have this, that in neurological conditions, different, obviously different conditions, you will be able to you will get your dosage like that. But are there any positives or negatives of using medical cannabis in neurological disorders for a long time, or do you give them for a long dosage, or are they short courses, or you like to give a patient the dose and then you taper them off, give them a break? How does it work with neurological disorders, or are there any contraindications in neurological disorders which doctors should be aware about while using medical Yeah, cannabis? right. Okay, so see, cannabis, medical cannabis is a serious medicine. So it you have to consult a doctor to actually see which kind of a dose is suiting you. कौन सा डोज है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, किस टाइप का एक्सट्रैक्ट है, हर एक चीज़ फुल स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इफ़ यू आर एलिजिबल टू टेक दैट और नॉट, आपका डाइजेशन कैसा है, हर एक चीज़ डॉक्टर हैज़ टू अपने हिसाब से. Because see, And when you start giving cannabis, it definitely helps. I have seen no patient who has had side effects. So I would recommend all the doctors, if the doctors are seeing this, that you start with a particular dose as per their body weight and their digestion particularly. आप especially मतलब history taking is the most important thing here. When a patient comes to you, especially to Ayurvedic doctors, the patient is diagnosed already. So they come to you when they have lost faith in all the treatments all mostly. other. But nowadays people are Exactly. quite aware, quite aware about the effects of Ayurveda and neurological disorders particularly. So I would recommend, in fact, in cases of brain tumors also, अगर patient आपका brain tumor का patient है, आप उसको भी दे सकते हो. So you have to work like a team with the doctor also, if the allopathic doctor is also treating. So there's no harm in doing that, and have a good relationship with the doctor also, and treat the patient holistically that way. And that Yes. that also works. And like you've mentioned about the cannabis के effects कैसे होते हैं, क्या नहीं होते, there is no such side effect. In case, I would particularly say कि epilepsy वाली cases में you have to be a little careful. Just start with a particular dose, stay in touch with the patient, nothing wrong happens. एंड जैसे आपने बोला कि लंबे टाइम तक लेना है मेडिसिन या नहीं, व्हाट हैपेंस जनरली विद द पेशेंट इज द कंप्लायंस बेसिकली. So your follow up as a doctor should also be good with the patient. Like for example, you've given the patient a medicine for particularly 15, 20 days, 30 days के लिए आपने दिया कि आप अभी से start करो. So you have to ask the patient again after 30 days through your team or anybody that how the patient is doing.
because you are giving cannabis to a particular patient, he can, just buy it himself, वो अपनी dose बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, then they blame the doctor, and we never know what is happening. So you have to always, stay in touch with the patient, always see what kind of a dose he is taking. If the patient needs to, stop taking medicine for some time, like for example 6 महीने हो गए और वो बहुत लंबे टाइम का ले रहा है, so what if happens in case of this is that CBD tolerance develop हो जाती है बहुत patients में. So in that case, you just give a 7 days detox in that case, or just reduce the dose and give a detox for the body, to just get back to the normal state. I mean, regenerate itself and be able to, take cannabis again the way it was taking. सो आप वैसे कर सकते हैं. और बाकी कैनबिस बेस्ड मेडिसिन, लाइक यू मेंशन अबाउट द साइड इफेक्ट्स, तो अगर आप हाई डोज में लोगे, कुछ कुछ पेशेंट होते हैं वात वात प्रकृति और वात व्याधि है ऑलरेडी, तो साथ में आप हमेशा सपोर्टिव मेडिसिन चलाइए फॉर, जस्ट गिव समथिंग लाइक कैस्टर ऑयल टू द पेशेंट. यू हैव टू सी विच अनुपान ऑल्सो यू आर गिविंग टू द पेशेंट, कौन सी प्रकृति का आप दूध के साथ दे रहे हो मेडिसिन, वो ल्यूब्रिकेशन हो रही है या नहीं. क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होता है कि ड्राइनेस होती है, ड्राइनेस ऑफ throat, especially in case of patients who have constipation and acidity, which I have seen. So I always give an antacid, Ayurvedic antacid, या फिर कुछ something to, clear his stomach up. और I just tell them कि यार आप ये वाला particularly आप ये diet लेना to avoid constipation if at all it happens. So I have just educate your patients that, you might get these things. If something happens, let me know. And we generally tell our patients to, increase the fluid intake also in their body. So fluid So you're intake saying monitoring the patient is the most important thing, is the most, yeah, and it works very well. starting with the lower dose always is Lower dose and then beneficial, increasing because also then you can accordingly. adjust the cannabis Yeah, tolerance and figure out how the patient yeah. is reacting to that. And you're Yeah, saying that and you have to any see the in compliance again. How if you're, yes, because you have tablets, you have capsules also in your formulations. You have yes, these extracts. You have CBD oils, which are, infused in the MCT oils. So in that case also, will be that compliance also you have to see for the patient, because sometimes patient doesn't want to take oil. He's not liking the taste. That yes, also it you have depends to delivery educate the system patient. उनके लिए कौन सा सूट कर रहा Yeah, you have to educate the patient that, you need this particular dose. आप ऐसे लो या ऐसे लो. So it totally depends on the patient, doctor and the patient, how they are making that, work together. So definitely it helps. I would say Parkinson's or Alzheimer's, जैसे हमने किया, there are so many studies on patients, and I've seen my patients also getting better than before. They are not they are able to do their work with the medications they are taking. I won't say that don't take allopathic, but yes, with that, please, start taking this also. As I mentioned about brain tumors also, क्या होता है कि brain tumor का patient जो होता है, he develops seizure disorder. So in that patient also, you should be giving cannabis in some or the other form. This is really going to help that patient reduce the, you know, side the effects of seizures, the brain tumors that has, come up. और स्ट्रोक की कंडीशंस में भी, अब स्ट्रोक की बात हम करें तो आजकल, हाँ, वी आर ऑल इंडियंस, वी ईट अ सर्टेन काइंड ऑफ अ फैट इन आवर, डाइट. तो Yes, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से स्ट्रोक होने के चांसेस हो जाते हैं. बिकॉज क्या होता है कि आपकी जो पूरी बॉडी के आर्टरीज वगैरह हैं, तो ब्रेन में भी आर्टरीज और वेसल्स होती हैं, उसमें भी हो सकता है कि प्लेक जमा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, वो ब्लॉक हो जाए, इस वजह से आपका, देयर इज हेमरेज और सम एन्यूरिज्म इन योर ब्रेन विच कॉजेज स्ट्रोक, जिस वजह से पैरालिसिस भी हो जाता है. तो पैरालिसिस के केसेस में इनफैक्ट यू कैन, रब cannabis also, cannabis oil, CBD oil infused in your oil. topical There application. are particularly some brands, you are also making a CBD based oil which you can apply to the body, that reduces the pain of the patient also. And it is, I think, hemp seed oil based, right? Yes, So yes. Most of it the is, carrier oil is hemp seed oil, because hemp and seed it's oil in very itself good has lubricating. anti-inflammatory properties, and Yeah, plus it's it very is good with omegas and anti-inflammatory. vitamin D. Yeah, and it is lubricative also. So what happens with patients, such patients, is that they have dry skin also, they start developing skin disorders, or they are bedridden, they start having these bed sores also. In that case as well, आप मतलब hemp seed oil works very well infused with CBD. So stroke के case में भी you can start it, because this is anti-inflammatory, and it has some anti-clotting properties also, the cannabis extract. So it's a wonderful drug to start with. But yes, you have to see the dose, the patient, what kind of patient he is, constipation तो नहीं है, या फिर डायरिया नहीं है, किस टाइप का है, आप खुद डिसाइड करना है. आप उसके साथ जो भी सपोर्टिव मेडिसिन दो, उसको उसके साथ दो. When you feel that, your patient is going to have
this constipation after taking a certain kind of a dose. He might have constipation, so we don't want our patient to suffer. We just give some other medicine, or just tell them, this might happen, just do this if this happens. And this doesn't happen on the first day. ऐसा नहीं होता कि आप first you're having CBD and first day आपका गला सूख रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. So you have to, doctor has to decide what kind of a dose I will start with this particular patient and how he is able to take it. So every patient is different. Are there any particular neurological disorders in which medical cannabis should be very, very carefully handled? In the sense, Yeah, like, I've mentioned ना, epileptic disorders में आप no, that is a positive effect of cannabis. I'm saying, are there no, any neurological this can disorders? THC, high THC in epileptic patients can trigger their epilepsy also, बढ़ा सकता है So ना. you're saying in a certain neurological, can you mention a certain neurological disorder where THC should be particularly looked upon and where THC is not a problem? ओके, स्पेशली इन पेनफुल डिसऑर्डर्स, जैसे कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड कोई है, जैसे पेनफुल इश्यूज, कोई भी न्यूरोलॉजिकल, जैसे हमने भी पैलिसिस के बारे में बात की, उसमें हम दे सकते हैं आराम से, बिकॉज एनी वे पैलिसिस में एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन दी जाती हैं ही ऑलरेडी. आप इसको साथ में दे सकते हो. यू जस्ट टॉक टू द पेशेंट, tell that patient that, tell your doctor that you're taking this. एंड डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, ऐसे कोई हेमरेज की इश्यूज. सो हाई हाई अमाउंट ऑफ THC कैन ट्रिगर. अभी हम, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, सो पर्टिकुलर इट इज जस्ट एपिलेप्सी विच आई वुड स्ट्रेस अपॉन कि आप देख के अपने पेशेंट को दीजिए. बट डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि you cannot give in epilepsy. You have to see, you have to start with a small dose, just see how the patient is doing, just do follow ups, take a proper history. तो ऐसे कोई पर्टिकुलरली ऐसे कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है नहीं जिसमें हम नहीं दे सकते हैं THC. We can give. It is Are only there any? because, yeah, because see, epilepsy is a different kind of a thing. This has different electromagnetic जो forces हमारी बॉडी में मतलब impulses जाते हैं, वो उसको ट्रिगर कर सकती है ना. So but in other cases it is helpful in releasing hormones, everything. It can be taken. So you're saying this because we understand that THC particularly, when it's given in the right dose, it actually is a relaxant. But when it's overdosed or it's not given correctly, it can induce anxiety. So that is the Yeah, reason you're saying that it should be looked at for yeah, cure. yeah, right, right. Ma'am, are So there any anyway, particular right cases now that you? the medicines that are available does not contain a lot of THC also, Abhi. Yes, So there are it no is the doses. main component is CBD which works. So I would recommend that you can take, because patient what should not themselves try कि I will take two medicines, two tablets, or I'll No, just no. take a full Anyways, it's dose. categorized under Like, schedule. Even I think without a doctor's yeah. opinion, this So this medicine should be should not be taken given care of. anyways. And education to the patient is very important, because Yes, people don't take this seriously sometimes, but cannabis is a serious medicine. yes. बिकॉज आयुर्वेद में इसको विष बोला गया है. तो विष को अगर आप युक्ति से अच्छे से यूज करोगे, अच्छे प्रॉपरली प्लान करके यूज करोगे, तो ये अमृत की तरह काम करता है. सो Well said, ma'am. इट्स लाइक दैट. Are there तो any वी, particular cases which come to your mind in neurological disorder where you've been able to use medical cannabis and you've gotten? yeah, as I've told you, Treatment? I've seen Parkinson's patients, particularly neurological disorders. Mein I have a patient of dystonia right now. So that is a movement disorder. So he's having orolingual dystonia. Um, so we have started giving this cannabis also in that case. I have seen quite a lot of patients for Parkinson's also, patients who've had a brain tumor also. तो जिनका ट्यूमर निकल गया और वो कैनबिस लेना चाहते हैं, बिकॉज दे आर फेसिंग ट्रबल्स आफ्टर टेकिंग, आफ्टर गेटिंग इट रिमूव्ड. It doesn't go away totally. You have to be on anti-epileptic pills, because once a part of your brain has been removed, so some part of the healthy part of it also Brain gets also. removed, Yes, right? yes. So उसके केस में भी मैंने दिया हुआ है कैनबिस, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. एंड So एपिलेप्सी how छोटे long, बच्चों ma'am, did you को give the respiratory medicine and how fast did you see the results coming in? What is the time duration in which you saw within results in Parkinson and the Parkinson's movement में. disorder case? ओके, पार्किंसंस में वी सी विद इन 7 days to 10 days. बट पार्किंसंस के केस में थोड़ी सी हाई डोज देनी पड़ती है. तो बिकॉज एवरी पर्टिकुलर डिजीज दैट इज देयर, उसमें डोजेज भी आपकी डिफरेंट होती है. किसी में माइक्रो डोजिंग आप कैसे दे रहे हो, वो अलग अलग होती है. सो उसके लिए एनीबडी वांट्स टू जस्ट start giving this to your patient, you learn in the beginning
in the process. If you're totally new to starting cannabis in your practice, you can start with a small dose, or consult the doctors who are actually doing this makes you more confident about the thing that yeah, I can give this to my patient. He's hopeless now, at least I can give cannabis to him to improve the quality of his life also, and to improve his disease also. So like I've told you, ये spinal cord injuries जो होती है उसमें भी अच्छा work करता है, lumbus spondylosis इन सब में, because it's anti-inflammatory also in nature. So Yes, I think it now works. it being anti-inflammatory works in a lot of conditions, and I Yeah, think any condition which we have in our body, from infection to any yeah. trauma or anything, inflammation is a part of it, and it Yeah, and being again, we as we anti-inflammatory talked works like about that. वात व्याधि, तो एंजाइटी और स्लीपिंग डिसऑर्डर्स तो पेशेंट में होते ही होते हैं, और कॉन्स्टिपेशन, ये तीन चार चीजें हैं जो होंगी ऐसे पेशेंट्स में। आप अगर देखोगे, अगर And पेशेंट वोंट even if टेल यू इन they're द not फर्स्ट प्लेस, बट इट इज देयर naturally not there, I think because of these conditions, anxiety or let's say sleep बिकॉज disorder or any gut disorder, वो because of condition भी induce हो जाता है। तो वो हाँ उस कंडीशन की वजह से हो रहा है, तो वो पैरेलली उनको साथ में होना शुरू हो जाता है, which I've seen in a lot जी of cases, especially sleep. Sleep is affected. The first thing which is affected is sleep. So I या think that way, I think it is a very holistic approach I have given where this in, cannabis takes. yeah, I have given this in multiple sclerosis also, ये जो cannabis होता है. So, but you have to be a little careful in this case also, multiple sclerosis में, again, because I mentioned about the constipation issue. ये वाला topic हमेशा आ ही जाता है neurological conditions में. You have to be careful when you're giving cannabis. Give some laxative to the patient, or something that doesn't make, is lubricating the intestines of the patient, and tell them what kind of a diet you have to follow, because that plays a very important role. ट्राइजेमिनल न्यूरalgia के बारे में भी हमने बात नहीं की, तो ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में बहुत अच्छा वर्क करता है कैनबिस. यू कैन स्टार्ट विद एक्सट्रैक्ट्स, और यू कैन स्टार्ट विद कैप्सूल्स ऑल्सो, इट वर्क्स रियली वेल. ट्राइजेमिनल न्यूरalgia में क्या होता है कि आपकी एक ट्राइजेमिनल नर्व होती है, सो उसमें मतलब उसमें इशू आ जाती है, जिस वजह से ब्लॉकेज हो जाती है उसके अंदर नर्व्स में, जिस वजह से आपका ये पूरा जॉ वाला एरिया, इट फील्स लाइक देयर इज थंडर कमिंग. तो ऐसा लगता है कि करंट जा रहा है, बहुत Okay. पेनफुल होता है, जॉज में पेन होता है, करंट फील होता है. सो यू कैन इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ अ पर्सन इज गेटिंग an electric shock on the face. So which it is very painful, it's a very painful condition. So us case में भी I have given cannabis to my patients. It has improved their quality of life. It has improved the the frequency, जो frequency कम हो गई है patients की, वो current आने के, तो which is a very big thing. I mean, because trigeminal neuralgia has no cure so Okay. far. So either you have to go for a surgery for that. Like Salman Khan is an example for that. He had trigeminal neuralgia. So he underwent surgeries in America and all these things. But that is for those people, and it is not readily practiced in normal people. Right. So, but TMJ has no. I mean, this trigeminal neuralgia has no cure as such, or trigeminal neuralgia में it works very well. You can give to your patients with some रस औषधि, जैसे आप रसराज रस या वात कुलांतक रस, महावात चिंतामणि रस, ये सब चीजें, मतलब it depends on how you're diagnosing your patient and what kind of a disease medicine you're choosing. But with cannabis, the pain and relaxation of muscles also happens. So जो muscles अगर आपके relax हो रहे हैं, तो आपके nerves, because your body is such that you have tendons, muscles, So it acts like a nerves, nerve relaxant. together, they work together, right? So it works on all levels. So, and definitely because these people have a, they fear sleeping also sometimes. So sleeping में भी बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा वर्क करता है. तो ट्राइजेमिनल neuralgia में भी आप इसको पेशेंट्स को अपने रेकमेंड कर सकते हो. But yes, in high dosages you have to give, because that patient has a Yes, we have serious condition. understood that from you, that the patient history and patient Is observation is very, very important, and you need to manage the dose accordingly. So you have to be patient with the patient also. Listen to that patient, what exactly he's going through, and then make a good a good prescription. How you can help the patient, manage his, support his other symptoms also. Work particularly on this disease, and tell him other things that he should be doing or not. For example, like we tell our patients in neurological conditions कि आप अपने आप को अभ्यंग साथ में करो, and don't talk very loudly, especially जैसे ट्राइजेमिनल न्यूरalgia का पेशेंट है कोई, वो तेज तेज बोलेगा, उसको प्रॉब्लम होने लगेगी, क्योंकि वात बढ़ेगा. आप अगर तेज तेज बोलोगे, ज़्यादा मुंह चलाओगे, उससे वात बढ़ता है, उससे प्रॉब्लम्स होगी.
We tell जी. our patients what all, I mean, precautions they can take and how they can manage it. तो ये चीज़ है. Thank you so much, ma'am. I think that was a And lot of information. And yeah. In yeah, fact, like please. we talked about neurological conditions again, तो जैसे balance disorders होती हैं, सेरिबेलम से आती है एटैक्सिया वगैरह, उस केस में भी आप पेशेंट को दे सकते हो. आई वोंट से इट इज गोइंग टू रियली क्योर दैट, बट उसके केस में पेशेंट को आप दे सकते हो बिकॉज दैट पेशेंट रियली एंशियस टू वॉक ऑल्सो, क्योंकि बैलेंस आपका खराब हो रहा है बिकॉज ऑफ योर ब्रेन. इट इज नॉट अ Yes. बैलेंस, बेसिकली आपके कान से बैलेंस होता है. Yes. You're walking and you're doing things, you're seeing things, so it is your ears which balance. But when it is coming from the back end, I mean जहाँ से actually आपका balance वो हो रहा है, function control हो रहा है, so then it is difficult to cure. उसके केस में भी आप patient को दे सकते हो, but no, you have to take care in that condition. आप ज़्यादा ना दो because cannabis can cause drowsiness also. In that case you Yes. have to tell the patient to take it at night and not drive. तो आपको हमेशा patient जब ऐसा कोई हो और आप हाई डोज दे रहे हो, तो पेशेंट को आपको बताना है हमेशा कि आधे 1 घंटे बाद के टाइम स्लॉट में यू हैव टू सी हाउ यूर फीलिंग. डोंट ड्राइव एट दैट टाइम और डोंट डू आई मीन रिगरस एक्टिविटीज जिसमें यू कैन बी इन डेंजर बिकॉज दिस कैन कॉज ड्राउजीनेस ऑल्सो. I understand. So you have to always be in touch with your doctor if you're having such conditions, but you never stop having CBD. If at all there are one or two patients that might not, हमेशा ऐसा होता है कि कोई ना कोई छोटी सी पैरासिटामोल से भी एलर्जिक हो जाते हैं कुछ पेशेंट्स, है ना. दोज आर That रेयर. we've seen. We या get those patients are, जिनका कोई असर नहीं होता है और they have a negative this thing, but yeah. it comes in one in 500. So yes, you can get this kind The of. negativity and the lack of education about cannabis, because we Yes. consider cannabis to be a drug. So this is not actually a drug. It's a very healing medicine. It's one of the uh, you know uh, five sacred plants in Hinduism and the Vedas Yes. also. Yes. So definitely it has a very good body healing, body mind, soul healing properties. So definitely, I would recommend that you start giving to your patients, or the people who are suffering from such diseases can consult us and uh, get a better outcome for their disease, and Definitely. Definitely, prepare ma'am. to have a better life. Yes, Yeah. that was a lot of information, and I think it should be a very informative session. आपने बीच में एक चीज mention करी, the diet is very important. I think we're gonna do our next session with you on diet, and I know that you particularly look into diet also. So I think we will pick your brain from the next session about the diet importance and the gut health will and how cannabis can help with appetite and other stuff like that. But I'm not gonna take more of your time. I think we have already you've given us a lot of information on this. Thank you so much, ma'am, for this afternoon. Thank you. And I would like to thank Indian Vedyas once again. And I will catch you guys soon again. We'll catch Dr. Maria for gut health and diet next time. And we'll update you All right. whenever the session is. Thank you Definitely so looking much. forward to that. Thank you so much for being a good audience, everyone. Thank you, Mr. Vikram. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay, have a good afternoon, everyone. Thank you. Same.